Okay, so it's the same kind of a picture. It's showing you a capillary end, which is this end. Let me I use can't the red see color it. for this. I You can't see can't. it. अच्छा, I'm you can't. sitting here. Okay, just a minute. Mhm. Okay, so now you can see the screen, and this is the capillary end. This is the venular end, and you can see क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, high pressure. Okay, high pressure, and over here low pressure. ठीक है. अच्छा ना, if the pressure is high, what will happen that we know कि ये capillary है, ये capillary bed है ना. तो पीछे Yeah. जब हम capillary का structure कर रहे थे, we were doing this structure, so we said that the capillaries have tiny spaces like these. ये spaces है ना, ये gaps हैं, the gaps or the spaces. So through these gaps, what can leak? Look what's leaking. Plasma can leak. जो हमारा blood होता है ना, our blood is a combination of two things. Our blood is made up of two things. One is the liquid portion, the transparent liquid, which is the plasma, and one is the cellular portion, which is made up of red blood cells, white blood cells, and platelets. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है कि through these tiny pores, nothing can move out. The red blood cells can't move out, but only the plasma is moving out. और वो भी क्यों move हो रहा है? क्यों? इसलिए कि this end पे, at this end, the pressure is very high. Pressure की वजह से ना plasma seep हो रहा है, कैपिलरी से बाहर आ रहा है. Okay. This much is understood? समझ आ Yes. गया? Yes. अच्छा, अब So जब ये प्लाज्मा basically, बाहर जा, red blood cell is bursting in the capillary what or is leak. bursting? The red blood cell in the capillary is basically bursting. No, 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 not the red blood cell. Nobody is bursting. ये जो बड़ा ह्यूज सा आपको देखो, ये बहुत सा, ये पूरी कैपिलरी है. This entire thing is this is one, this is another capillary network है पूरा ये. ये सब ठीक है. दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क. हर कैपिलरी, किसी भी कैपिलरी को उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं. So what is running inside the capillaries? Red blood cells are running inside the capillaries. But what can leak through capillaries? Capillaries से बाहर leak क्या कर सकता है? Plasma कर सकता है. Red blood cells can't leak. What is the significance of plasma leaking? Significance ये है कि देखो आपके जो cells है ना, अब इन्होंने इस डायग्राम में सेल बना के दिखाया है. Cells have to be bathed in some fluid, and that fluid is plasma. जब ये प्लाज्मा बाहर निकलेगा तो पूरे सेल्स इससे नहाने शुरू कर देंगे. फॉर दे जस्ट फ्लोटिंग इन दिस प्लाज्मा, एंड दैट्स व्हाई सिंस दे आर फ्लोटिंग इन बिटवीन द सेल्स, एंड सिंस अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज अ टिश्यू, तो इस फ्लूइड को अब हम प्लाज्मा नहीं कहते. जब ये बाहर आ जाता है कैपिलरी से तो हम इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, राइट. अच्छा, अगेन व्हाट आर वी लुकिंग एट? We are looking at a capillary network or a capillary bed, and this is the high pressure end, this is the low pressure end. At the high pressure end, which is the capillary end, the plasma, which is the liquid part of the blood, will be forced out of the capillaries, bahar aa jayega. And when it is forced, it's going to just bathe these cells and allow them to sort of have a medium so that they can move around in that medium, and then it's known as tissue fluid. और इसी टिश्यू फ्लूइड में से ही जो है ना, आसानी से क्या होगा, ऑक्सीजन will go towards the cell, carbon dioxide will move out of the cell. Out of समझ the आ रही है बात? okay. Miss, I get it. ये basically it's just happening what just miss, ये छोटे छोटे cells है ना सारे. ये वाले ये टिश्यू सेल्स हैं, एंड दीज वंस आर द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स कभी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे. रेड ब्लड सेल कैपिलरी में ही रहेंगे. मिस, मुझे एक बात एंड दी समझ आई in that other diagram where we studied about capillaries, so what we studied was हाँ, that capillaries are providing oxygen to those cells जो उनको surround कर रहे हैं, सही है. लेकिन ये कौन एग्जैक्टली से cells हैं? Like this is the ये कौन tissue सा, ये
है या। ये भी वही है, ये भी वही है, सिर्फ फर्क ये कि वहां पे सेल नहीं बने हुए थे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। इसको मैं बना लेती हूँ, लेट मी मेक इट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू शो सेम डायग्राम है, आई कैन मेक सेल्स, इधर बना लेते हैं, समझ आ गई? Yeah, got ऐसे it. वो करके, तो I got it, yeah. And miss, in ठीक every है। capillary there is blood which has, and उस blood के कंपो उसमें प्लाज्मा भी होगा, रेड ब्लड सेल भी होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होंगे और प्लेटलेट्स भी होंगे, राइट? बिल्कुल, और सिर्फ प्लाज्मा लीक कर सकता है। एंड और वन मोर सेल कैन आल्सो लीक, एंड दैट इज द white blood cell. I'll show you how, because yesterday when I was doing this question with you, हाँ, ये क्वेश्चन इधर, ये देखो, हम्म ये कैपिलरी ही है, हम्म ये कैपिलरी है, उस कैपिलरी में से प्लाज्मा कैन लीक एंड सी। अब वो जो उधर जो डायग्राम बना हुआ था ना, वो कैपिलरी को ऐसे गोल बना के दिखाया था, ये वही वाले सेल्स हैं, सेम सेल्स। और ये सेल्स कहाँ हैं बाय द वे? एक सेकेंड, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड they were saying name the structure O and the क्या था, टाइप ऑफ ब्लड वेसल पी। तो स्ट्रक्चर ओ जो है वो तो आपका व्हाइट ब्लड सेल है, एंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल पी, तो ये ब्लड वेसल पी जो है ना, ये साफ है कि ये कैपिलरी है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन इन अ वेन और एन आर्टरी। या ठीक है, सो दिस इज अ कैपिलरी। अच्छा, कैसे कैपिलरी है? सबसे आसान जो तरीका है ना, इफ यू आर आस्क्ड, इनफैक्ट दूसरे वाले पार्ट में पूछा भी था कि state two features that are characteristic of the type of blood vessel P. So the features that are characteristic of type of blood vessel P is that the wall is extremely thin. ये जो आपकी इसकी wall है, is extremely thin. Let me just rub this and I'll tell you how. ये इसकी वॉल बड़ी थिन है, इट्स इतनी थिन है कि इट्स जस्ट वन सेल थिक, एक ही सेल से वॉल बनी है, जस्ट वन सेल, ये रहा वन सेल। ठीक है, सो यू विल से, आई कैन से, यू विल टेल द एग्जामिनर, आई एम श्योर दैट दिस इज नॉट an artery or a vein because its wall is thin. या And how much thin के सिर्फ एक सेल उसमें आ सके, one cell thick, and it has spaces in between the cells, ये वाली spaces in between the cells. And one more evidence that gives me that it's a capillary is that I can see that the WBC can squeeze through the space, can squeeze. Got या it? या ठीक है, let's come back to where we were. बस ये लिख सकते हैं ना, द व्हाइट ब्लड सेल कैन स्क्वीज थ्रू द सेल, मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे। अच्छा, अब आप देखो, लेट्स कम हियर, वी सेड के दिस इज द हाई प्रेशर एंड, तो इसलिए प्लाज्मा लीक हो रहा है, एंड या दिस इज द लो प्रेशर एंड, तो लो प्रेशर में पता है क्या हो रहा है, लीक नहीं हो रहा, लो प्रेशर में वापस अंदर जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर आवर बॉडी, कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा प्लाज्मा लीक हो भी गया अंडर प्रेशर, इट विल कम बैक at which end? At the venular end, because this is the capillary end, this is the venular वेन्यूलेट। end. ओके। और ये वाला अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ना, तो मैं कहूंगी कि ये वाला जो एंड था ना, ये वो वाला एंड है जो लाल लाल नजर आता है शुरू में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टार्ट ड्रॉइंग लाइक दिस, ऐसे ही था ना उधर उस वाली पिक्चर में, अब ये लाल लाल है। ठीक है, अब यहां तक बाय द टाइम इट रीचेस, नाउ द ब्लड हैज बिकम डीऑक्सीजनेटेड, सो नाउ these venules will reunite to form the vein. So अब समझ आ रही है, ये वो डायग्राम को उस डायग्राम में अगर हम फिक्स कर दें तो। यस यस मिस, ठीक है, ओके। आई हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस इन द एग्जाम। उधर उधर ये लोग मेंशन तो करेंगे ना, लाइक वेन, स्मॉल वेन, रेड, मतलब कुछ तो मेंशन करेंगे ना, सो आई गेट टू नो। मेंशन कर भी सकते नहीं भी कर सकते, यू हैव टू लुक एट मुझे द कैसे डायग्राम पता वेरी चलेगा केयरफुली। कहाँ हाई प्रेशर है या कहाँ लो प्रेशर है? फिर आप देखो एरो कहाँ जा रहे हैं, लुक एट द हम्म। एरोस, ओ हियर द अच्छा, एरोस आर एरोज गोइंग में आउट। होंगे। बिल्कुल होंगे एरोस। ओके, फिर सही है। ठीक है, इनफैक्ट एरोज आई गोइंग जस्ट आउट वेट। इसका मतलब हाई सेल्स। Name the type of blood vessel labeled B and give your reason for give the okay.
Is the blood vessel B is a capillary? Hmm. And how many reasons do I have to give? 1 mark for naming the blood vessel and 2 marks for 2 So reasons. basically reasons, all right. So, Miss, it's a capillary because it has a thin wall which encompasses white blood cells and is surrounded by tissues. And Miss, second Correct. reason would be हाँ, that second reason पता है क्या है इसमें? an Here we easily can't see complicated. spaces. हाँ, we can't see spaces. The other feature है जो मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया था वो ये है कि in capillaries the red blood cells they are only moving in a single line, in a single file. Do you see they are moving in a single line? या मिस, बट आपने उसमें डायग्राम में तो स्पेसेस दिखाई थी. इसमें नहीं बनी हुई ना. समझ आई बात? तो एग्जामिनर की मर्जी है आपको कौन सा भी डायग्राम दे दे. But अच्छा. here the clue that the examiner is giving you is that see we said कि capillary का lumen बहुत narrow है. तो वो उसकी नैरोनेस की जो एविडेंस है ना वो इसी से पता चल रही है कि रेड ब्लड सेल्स कांट मूव इन अ पाइल. Yeah. दे कैन Oh yeah, ओनली मूव yeah. इन अ Okay, सिंगल okay, okay. लाइन. Oh yes, 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 ma'am. ठीक है. Okay. सो दैट्स व्हाई. ठीक है. सो Yeah, ये yeah. इसका रीजन हो गया. सो ठीक है हमने रीजंस कर लिए. आगे बढ़ते. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी दैट ओवर हियर व्हिच शुड बी द कैपिलरी वाली एंड या आर्टीरियल एंड कह सकते हैं. व्हिच शुड बी दैट एंड? And D. The capillary end and which is the venous end? Venus is E and Miss, लेकिन okay, okay. हाँ. अच्छा what tells you that venous is E and capillary is that one? What tells you that? What tells you that the venous end is E and the capillary end is D? Diagram से आपको कैसे proof मिल रहा है? Arrows देखिए. नहीं, arrow देख के नहीं मिल रहा. एक और चीज से मिल रहा है. At E it's written blood cells flowing smoothly and at D it says blood cells flowing in pulses. Pulses का मतलब होता है pressure. धक 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 ऐसे करके. ठीक है. That's the clue. अच्छा मिस, अगर सही और है. क्वेश्चन में ये भी ना लिखा हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा? लाइक ओके, आई एम लिखा नॉट होगा. गोना. होगा. अच्छा होगा, ओके सही है. बिल्कुल लिखा होगा. अच्छा. अभी Name the जब मैंने liquid leaving the blood. हाँ क्या बोला? मैंने अभी जो आपको आंसर दिया था, दैट वाज जस्ट लाइक अ रैंडम गेस, तुक्का लगाया था. Random. It was a coincidence. हाँ. अच्छा. Name the liquid leaving the blood vessel at C. अभी अभी हमने क्या है? Which liquid leaves? प्लाज्मा. Plasma. Very good. अच्छा. Using information from figure 4.3, explain why the blood is under high pressure at point D than at point E. अब हमें देखा फंसा दिया ना एग्जामिनर ने. मिस मार्क्स कितने हैं? 3 marks. Why is the blood under a high pressure at point D than at point E? Do I have to say the whole process? No, you don't have to say the whole process. Question को पढ़ो. आपसे पूछ रहा है कि क्यों D में high pressure है और E में नहीं. You will say that the D end is the capillary end which is closer to what? Closer to the large arteries, and the large arteries are closer to the aorta and the aorta is close to the heart. ठीक है. So hence pressure. the pressure in this end will be higher. That end which is E is closer to the veins, and the veins always have a low pressure because they are going and carrying the blood to the heart. The flow of the blood in the veins is very very slow. So if the flow is slow, the pressure will also be slow. ठीक है. Look, इस तरह के questions ये वाले. अच्छा. What did I say? In fact, just stop. Let's just take out the mark scheme and look at the answer. This is November 7. Okay. Okay. So look, if you remember the question, answer is capillary. Okay. And they were asking you what are the reasons to see. क्या लिखा हुआ reason? Why is it a capillary? The blood cells are moving in a single file. समझ आई? Yeah. And एक आपका reason सही था कि the walls are extremely thin.
You can say the walls are permeable. अच्छा, permeable कैसे नजर आ रहा है डायग्राम में? इसलिए कि आपको नजर आ रहा है कि वहां से प्लाज्मा निकल रहा है. So Yeah. प्लाज्मा निकल ही नहीं सकता जब तक वॉल परमिएबल. Are you getting my point? There's so many things to look at it. देखने वाली आंख होनी चाहिए. अच्छा, another thing is that this, why is it a capillary? Because it has been shown to you in the form of a network. It is so close to the body cells. So body cells से इतनी close, इतनी मोटी मोटी arteries तो नहीं हो सकती ना. ठीक है? Hmm. Use your Yeah. common sense. अच्छा, फिर what fluid comes out? So it's, your answer was plasma. Tissue fluid भी है तो correct है. It's safer to write down plasma. अच्छा, उसमें क्या था? Why is that end the at a high pressure and why is that end at a lower pressure? So look what's written. उस वाले end पे जहाँ पे high pressure है, there's a pulse, there is a Question के beat. दूसरा reason क्या था? हाँ, Miss, in the question C part 2, what was the other reason? एक तो ये था ना that it encompasses the plasma and all of that, and what was the second reason? किसकी रीजन की बात कर रही हो? पार्ट 3 पे रीजन पूछा था ना. नहीं नहीं, उसने ये भी तो पूछा था एक क्वेश्चन में कि ये कैपिलरी कैसे है, like what are the two हाँ, features तो about ये ये रहे रीजंस बेटा. ब्लड मूविंग इन अ सिंगल फाइल, red blood cells moving in a single file. I can see that it's a capillary network. I can see it's running in between the body cells. ये सब लिखा हुआ है आपके सामने. I yeah can see it's permeable. The reason I can see it's permeable is because I can see the plasma coming out. yeah तभी तो permeable है. ठीक है? yeah अच्छा, लेट्स मूव टू दिस लास्ट पार्ट पे करते हैं. एक एंड हाई प्रेशर पे है, the other end is at a lower pressure. So we say that the end which is at a high pressure is because it's close to the arteries or the arterioles or the heart, and there is greater pressure in the arteries, lesser pressure in the veins. ठीक है? Closer to the heart. अच्छा, दूसरे एंड पे जाएंगे जो ई वाला एंड है, तो ब्लड इज फ्लोइंग स्मूथली, देयर इज नो पल्स. पल्स यानी कि पल्स मींस प्रेशर नहीं है, बिकॉज इट्स मोर क्लोज टू द वेन्स और वेन्यूल्स. ठीक है? एंड बस दैट्स इट. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपिलरी नेटवर्क, फ्लूइड लॉस फ्रॉम द नेटवर्क, इसको छोड़ दो बस. आई थिंक दिस मच इज इनफ. ये बहुत हाई टेक हो जाएगा अभी. ठीक है? So what you do is that although it's there in the recording, so you can always listen to this recording, but if you want, you can take a screenshot of this mark scheme. I'll just Take a take it. screenshot. Yeah. Huh. Yeah. Miss, also I'm gonna send you the website Save My Exams. This is the website my teacher loves. Acha. Yeah. Take a screenshot of this as well. There it is. Acha, does Save My Exams, do it, and I think the best thing is to listen to it properly, and then you can, maybe ask questions afterwards, or you can message me. Now see, our blood is a red colored fluid. सबको पता है लाल रंग का है. It has a watery part and it has a cellular part. ये बिल्कुल इस तरह समझ लो कि एक टेस्ट ट्यूब में, if I take a test tube like this, okay, and I put some water in it. Water का तो कोई color नहीं होता, तो I'm just using the black color. ठीक है? ये हो गया आपका पानी. And इसके अंदर I put some red cells and I put some white blood cells and I put some platelets and I shake it. So since the red blood cells are the greatest in number, they're in millions. ठीक है? So the overall color of the blood, if I shake it, will be a test tube that looks red. So this is how our blood is red. But if we actually make a slide of the blood and we observe it under a microscope, we will see that our blood is made up of these cells जो आपको नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे. कौन-कौन से? The red blood cells, the white blood cells, and the platelets. ठीक है? All of you, you've been doing it in chapter cell. हम सबको पता है कि red blood cell कैसा है. It's a very special cell. It doesn't have a biconcave disc, doesn't have a nucleus, doesn't have any other organelle, lots of hemoglobin in it, job to transport and to carry oxygen to each and every part of the body. ठीक. अच्छा, large surface area to volume ratio, इसमें बहुत सारे questions आ सकते हैं. ठीक है? अच्छा, in fact, I have made very short videos. Those are my very, very initial
videos on the YouTube channel on red blood cells. लंबी भी नहीं है, 10-10 मिनट की है, 12-12 मिनट की, तो you can listen to those. ठीक है? Yes. Link. Just go to the playlist and go to cell structure O levels. ठीक है? अच्छा. And then you have the other kind of a cell which is the white blood cell. अब जो आपका white blood cell है ना, it is of two types. I'm zooming into those two types. Remember this: phagocyte and lymphocyte. Phagocyte जो कि left hand side पे नजर आ रहा है, it is a cell which has a multi-lobe nucleus and a granular cytoplasm जो नजर नहीं आ रहा, तो मैं dots बना के आपको दिखा रही हूँ. Multi-lobe nucleus and a granular cytoplasm, and we call it a phagocyte. ठीक है? हम उसको phagocyte इसलिए कहते हैं कि phago का मतलब है to eat and cyte means cell. ठीक है? अच्छा, क्या करता है phagocyte? Let's look what it's doing. और यही क्वेश्चन मैंने परसों पूछा था तो आपको नहीं आ रहा था. Let's say कि ये आपका एक phagocyte है. ठीक है? अब इस phagocyte को क्या नजर आ गया? It saw a bacterium. ये मैंने बनाया rod shaped bacilli. Very soon this phagocyte is going to engulf ऐसे करके by forming processes. It will try to engulf and surround. First surround and then engulf. ये इसका first stage है. Last stage इसका ऐसे होगा. ये ऐसे नजर आएगा. ये पूरा इसको surround कर लेगा और अंदर आ जाएगा इसके. ठीक है? So we say that this is a white cell. What is it doing? It looks very, very obviously that it's engulfing and trying to destroy or kill this bacterium. Achha. Since it can engulf and it can kill it, so we say कि ये जो process है ना of killing and engulfing, it is known as phago. Again, phago means to eat. Cytosis. ठीक है? जब भी हम बीमार होते हैं, we have fever, the doctor tells us जाएं आप अपना blood CP कराएं. Then when we look at our blood CP, तो हम उसमें से एक column होता है, उसमें phagocyte लिखा होता है. And if our phagocyte count is high, it shows that our immune system is working. It's giving you active immunity. Active हो गई ना? Antigen अंदर गया बीमारी की form में और आपके white blood cells बढ़ गए. क्यों बढ़ रहे? Because they are fighting for you. They are trying to get rid of this bacterium, engulf it, phagocytize it, and sort of kill it. ठीक है? Lymphocyte ऐसे नहीं करते. Lymphocyte ऐसे नहीं करते. What do lymphocytes do? The lymphocytes make antibodies. बस ये चीज याद रखनी है, दोनों का फर्क. Both are white blood cells. ठीक है? Phagocytes are also white blood cells. Lymphocytes are also white blood cells. Phagocytes engulf the bacteria. Lymphocytes make antibodies. That is it. और antibodies बनाने का मतलब कैसे, वो याद है कि हम कहते थे memory cells and all this, तो lymphocytes का यही काम है. Antibodies भी बनाएगा, memory cells भी बनाएगा, आपको active immunity देगा. ठीक है? सही है ना? तो lymphocytes, अब अगर हम when we say कि ना passive immunity मिली है, याद है ready made antibodies, तो ready made antibodies lymphocyte नहीं बनाता. Ready made antibodies are either you are getting it from the mother, the baby is getting it from the mother, or you are getting it from like a commercial preparation. आप बाजार से खरीद के antibodies लगवा रहे हैं. But the lymphocytes, when the lymphocytes are making antibodies in your body, we say it is active immunity. So basically आपको blood के ये सारे components के नाम आने चाहिए. You should know what is the blood made up of. You should know the function of each type of cell of the blood, and you should also know the function of plasma. Now your job